India's legacy. If you dream of a developed nation, Clean India should be your mission. Wow, what an inspiring quote. Oh wait, am I forgetting something? Oh yes. Good morning, respected Vice Principal Ma'am, Parul Ma'am, teachers, and my fellow Wonderlands. Today, I, Kashvi, And I, Sana, welcome you all to today's assembly Swachh Bharat on the behalf of Class 6C. nothing is better than a prayer to start the day. I request my classmates to recite the morning prayer. Be a part of the solution, not a part of the solution. Be someone who helps to clean up the environment rather than someone who adds to the polluting. Radha recite a beautiful poem and I liked it a lot. Well, if you liked it that much, then why not let her share it with everyone else? स्वच्छ रहे मन, स्वच्छ रहे तन, स्वच्छ रहे सारा जीवन, स्वच्छता से एक एक घर में महके हर आंगन, रहे जहाँ भी आस पास को रखे स्वच्छ व सुंदर, स्वच्छता है जिम्मेदारी, सोचो अपने अंदर. धन्यवाद. Radha practicing her poem in the classroom. So, should we call her on? Yes, why not? Cleanliness should be colored from America to Bangalore and all over the world. Let's first clean our room and help flowers outside
inspire others. But these days, no one bothers because everyone is busy inside. They don't get to realize what is happening in the world outside. Sad, isn't it? Yes, I know it is. Let's inspire others to clean, and to nature we mustn't be mean. Thank you. हमारी कक्षा छठी सी के विद्यार्थी आपके समक्ष एक लघु नाटिका पेश करने जा रहे हैं। भारत स्वच्छ बनाना है, हमने यह ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। अरे जब सिमरन आपको शॉपिंग करके बहुत मजा आया। हाँ, मगर अब हम बहुत थक गए हैं। जल्दी कोल्ड कॉफी खत्म करो, फिर हम घर चलते हैं। ये कहाँ से? वो रहा डस्टबिन। बहुत देर है। और यहीं फेंक दो। रुको, ऐसा मत करो, इसे डस्टबिन में डालो। तुम कौन हो? हमने यह ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। अच्छा, तो हमने भी ये ठाना है, हमें तो कनाडा जाना है। क्या बात है जब सिमरन, वहाँ की सफाई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। मेरा बस चले, मैं तो आज ही फ्लाइट पकड़कर वापस जाऊँ और वहीं पर सेटल हो जाऊँ। तुम जहाँ पर भी जाओ, बट रहोगे तो भारत के ही। और तुम उन्हें क्या कहोगे? ये हमारा देश गंदा है, इसलिए यहाँ आए हैं। नहीं नहीं, मैं अपने देश के बारे में ऐसा तो नहीं बोल सकता। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और लोगों को जागरूक करूंगा। कनाडा के बारे में देखी जाएगी। ओके, हमने यह ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। मजा आ गया। मैंने तो बहुत खाया, मेरी तो भूखी भी। अरे कलेश, तुम्हारा भी तो जन्मदिन आ रहा है। ये कोई जगह है? मैं तो अपना जन्मदिन समुद्र के किनारे मनाऊंगा। ठीक है, तुम वही मनाना, पर यहाँ का क्या करें? जो हमने गंदगी फैलाई, उससे पहले कोई देखे यहाँ से भाग जाते हैं। अरे नहीं, हमें ये साफ करके जाना चाहिए। अरे ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, सफाई करने वाले आएंगे, कूड़ा अपने आप उठा ले। ये उनकी नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर सफाई कर्मचारी 2 दिन के लिए नहीं आए तो ये कूड़ा यहीं पड़ा रहेगा। तुम कौन हो? हम भारतवासी हैं। और हमने ये कसम खाई है कि हम अपने देश को स्वच्छ बनाएंगे। अच्छा, तो तुम वो लोग हो जो लोगों को वैसे तो तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। सच में, क्या हम भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं? हाँ? चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ, सबको जागरूक करने। पहले इसको तो सांस लेते। चलो। यहाँ पर कितनी हरियाली है, यहाँ पर कितनी हरियाली है। मुझे तो भूख लगी है, फटाफट से कुछ खा लेती हूँ। अरे भाई का क्या तुम इस स्कूल पर लेके आई हो कचरा डालने के लिए? मुझे क्या जरूरत है? अरे क्या जरूरत है? हजारों लोग यहाँ पर आते हैं, ऐसे ही कचरा फेंक जाते हैं। हम भी यहाँ पर ऐसे ही। हाँ सही बात है। चलो जल्दी से खा लेते हैं, फिर हमको बाकी जगहों पर घूमने भी जाना है। रुको, अब पहाड़ों को तो गंदा मत करो। अरे यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं, कचरा यहीं पर फेंक के चले जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जब प्रकृति की सहनशीलता का अंत होता है तब फर्क पड़ता है। तुमने उसी को गंदा किया। वाह रे इंसान, आओ मिलकर कसम उठाए, अपने देश को स्वच्छ साफ सुंदर बनाए। धन्यवाद। I can request Principal Ma'am to share her empathetic words with us. Good morning, teachers. Thank you, children of 6C, for giving this assembly to us in one day. So, all of you need to understand that the children had only one day to prepare. This is a kind of an emergency assembly that we are having because we have so many children who have won so many awards and medals, and we would like to get them on the stage. So thank you so much, Kamal ma'am and the students of 6C to have prepared this in one day. Thank you. And again, I just want to say that it doesn't matter if we forget something, that's okay, right? So we all forget sometimes, that's okay. But my request is news has to be written. Nobody memorizes the news. So news children come and read out the news. So wonderful. I think
the Swachhata Abhiyan is on. We are all aware of it. Nobody needs to tell us. The skit was very sweet, but this is something that we all know. Yes? We are all going through it. Are you doing it in the school? When you're moving around, when you see wrappers on the floor, paper on the floor, do you pick it up and throw it in the dustbin? No matter who's thrown it. Are you doing that? Good. So that's one thing that he's just done. I've been sitting here and watching it. So great. We need to take accountability, and it doesn't matter if somebody else has thrown something. If we see something while we're going on the stairs, while we're outside, it doesn't take 2 minutes. Pick it up, throw it, but do wash your hands after that. Alright? So cleanliness is very important. Thank you, ma'am. Thank you, students. Great effort. Thank you. Aditi, Kavijo, sit. Get ready, students. And Adil Vanya of class 8. Third position, there was a tie. I request Harshpreet, Naitik, Yuvraj and Karman of Cedo House to get ready. Get ready, please. Sana. Samvidhi 5.0, the legal formula. In marketing of sale, we have earned a place amongst top 10 teams out of 38 participating teams. I would like to call Mannat, Nandika and Alaya from class 9 to receive the honor. Sukhmani Shaurya. Get ready to be on the stage. Rudra, Jishnu and Tanmay. Tanmay Maurya of 10C. All the students who have got medals and certificates from the Chaitanya Academy, kindly get ready.